अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ न्यू टीवी, आपको पता है कितना बड़ा हैसल हो गया आजकल टू फाइंड द परफेक्ट वन फॉर यू। कभी फीचर्स हैं तो साइज ठीक नहीं है, फीचर्स एंड साइज ठीक हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट गुड, एंड इफ ऑल थिंग्स आर गुड फिर साउंड इज एब्सोल्युटली टेरेबल। बट व्हाट इफ देयर इज अ ब्रांड दैट कैन गिव यू मल्टीपल यूनिक फीचर्स, मल्टीपल वेज टू यूज द टीवी, मल्टीपल OS choices and at multiple sizes also? Not possible? Actually it is now. आज मेरे साथ है यहाँ पे televisions from Daiwa. It's a made in India brand that has already become one of the highest selling TV brands in the country. काफी बड़ी manufacturing facilities हैं इनकी across India along with their own R&D centers. मैं रिव्यू कर रहा हूँ 3 of their best products and telling you all about them. शुरू करेंगे with the Daiwa 32-inch Smart HD Ready TV. 32-inch का HD Ready LED पैनल है, इसमें bezel-less डिजाइन है जैसे आप देख रहे हैं. Very good image sharpness, colors bright है, punchy है, there's absolutely no image tear. वो आता है ना usually when you get it in non 4K TVs, very clear picture quality is what we've experienced here. ये TV का operating system है Kulita UI, very easy to use, there's a lot of great features and built-in apps हैं like Prime Video, YouTube, Z5, Sony Live and a lot more. कोई भी और OTT app चाहिए, download it from their app store. You can even cast content from your smartphone, और ये जो है सिर्फ Miracast नहीं but also Apple AirPlay को भी आप कास्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें एप्पल एयरप्ले भी है। अमेजिंग। साउंड क्वालिटी वाइज टीवी छोटा है बट स्टिल हैज अ बिल्ट इन 20 वॉट स्पीकर। दे गेट वेरी लाउड, डायलॉग्स आर नाइस एंड क्लियर, म्यूजिक साउंड वेरी वेल बैलेंस्ड और एक ब्रॉड साउंड स्टेज ये क्रिएट करता है। Price of this TV is just 7,499 and considering इतने सारे features हैं, बड़ा interesting OS है, this makes it the perfect buy smart TV for everyone. Plus आपको एक और option है for buying a 43-inch in the same Kulita series. But what if you want a completely different feel to your TV? What if you want a TV with all the bells and whistles? Well, then there is the Daiwa 43-inch Smart QLED TV. Start करते हैं with the design. आप देख रहे हैं completely bezel-less. It looks very elegant, very minimalistic. I love the theme that Daiwa has gone with. Super premium look दो, feel दो, materials use करो, all around the TV. Speaking of premium, इसकी पिक्चर क्वालिटी was something that impressed us a lot. 43-inch का QLED पैनल है, making deep blacks, vibrant colors and accurate white tones also. इसमें ऐड करो HDR10 support and you have a really good looking television panel that delivers a great picture. तो अब आप देख रहे हैं एक dark tone DC फिल्म या एक bright Wes Anderson वाली true to life colors ये represent करेगा. Incredible picture quality is absolutely guaranteed. And I absolutely love कि कितनी seamlessly HDR works with Netflix and other OTT platforms on this TV. Which brings me to gaming. 4K resolution HDR के साथ best part, it has ALLM, auto low latency mode. कोई lag नहीं है while gaming. Games will look absolutely phenomenal and the action is relentless. Sound is excellent on this one also. 24 watt output है, Dolby audio के साथ nice bass response. There's even different sound modes you can switch to. But the best part about the TV, software, the operating system. ये एक Google TV है. That means full Play Store access है, including all these apps and many incredible Google features like Google Voice Assistant, built-in Chromecast, Google Photos and even Google on-screen keyboard. My favorite part लेकिन the Google TV app. Control करो अपने entire TV को right from your smartphone. No need for a remote. But the good part, Daiwa फिर भी आपको एक remote दे रहा है, classic Google TV remote with hotkeys for popular OTT apps. अब बात करते हैं about connectivity. Built-in Wi-Fi है, Bluetooth 5.0 है, ports की कोई कमी नहीं है इसमें. 3 HDMI ports है including an ER which is essential. एक RF port है, एक AV port है, 2 USB ports हैं, एक LAN port है, एक headphone jack है. All-rounder TV है ये with a price tag of just 20,999. I think incredible value and based on your suitability, you can even opt for a 32 panel, yeah, much bigger, 55-inch also. And speaking of 55, हमारा next TV 55-inch का 4K QLED Smart TV, लेकिन इस बार फिर से operating system is different. और ये powered है by LG's WebOS and ThinkQ AI.
आई टोल्ड यू ना, ये ब्रांड जो है मल्टीपल फीचर्स, चॉइसेस, पैनल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी लेके आता है। पिक्चर क्वालिटी ऑन दिस वन इज रियली ग्रेट। 4K क्लैरिटी है, HDR10 है, सुपर एक्यूरेट कलर्स हैं, वाइब्रेंसी है बहुत इस टीवी में। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस इसमें है MEMC यानी कि अल्ट्रा स्मूथ मोशन है, स्पेशली ड्यूरिंग फास्ट पेस्ड एक्शन सीक्वेंसेस एंड स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स। बॉल जो है ब्लर नहीं होगी, डबल नहीं कभी दिखेगी आपको। लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, QLED पैनल है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन पिक्चर क्वालिटी एट ऑल। एक सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस भी है। नो मैटर व्हाट गेमिंग कंसोल यू यूज विद इट विल लिव अप टू ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। साउंड भी इन्होंने बड़ी अच्छी दी है, टॉप नॉच साउंड है इसमें। 24 वॉट डॉल्बी के ऑडियो स्पीकर्स हैं इसमें। Can get really loud, fills the room and still no distortion. Real hero of course is the one that we all like, the WebOS UI. LG का सॉफ्टवेयर है, no lags and free LG के चैनल्स भी आपको मिलते हैं और आपको एक्सेस मिल रहे हैं टू ऑल OTT apps. Really smooth navigation. लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट इज दिस, द मैजिक रिमोट विद एयर माउस। और आप जो है LG के ThinkQ ऐप के साथ ऑल्सो यू कैन कंट्रोल द टीवी, यू कैन इवन यूज वॉइस कमांड, क्योंकि द वॉइस फीचर्स ऑन LG's WebOS आर फैंटास्टिक। एंड बाय द वे, ये सिर्फ एक टीवी नहीं है, इट्स अ पीसी एज वेल, एक रिमोट पीसी फंक्शनैलिटी के साथ। आप सिंपली कनेक्ट करो इसको टू अ कीबोर्ड एंड माउस एंड यूज द टीवी एज अ फुल फ्लेज्ड पीसी। सुपर प्रीमियम है, प्रॉपर फ्लैगशिप टीवी एक्सपीरियंस है इसमें, मीरा कास्ट है, एप्पल एयरप्ले भी है इसमें। नो प्रॉब्लम्स इन कास्टिंग एनी कंटेंट फ्रॉम एनी डिवाइस ऑनटू दिस टीवी। पोर्ट्स भी बहुत सारे उन्होंने डाल दिए। डाइवा आई थिंक कंजूस ही नहीं करता ऑन पोर्ट्स, राइट। प्राइस है इसकी 33,999 एंड इट कम्स इन 5 डिफरेंट साइजेस। शुरू होता है 32, फिर 43, 50, 55 and even a 65 inch. The best part is Daiwa has been in the game now for 40 years and for a good while now they have been making it right here in India. इनकी production capacity है 2.2 million TVs और ये serve कर रहे हैं exclusively in the Indian market. What's even more cool, everything is done in-house. Product design है, injection molding है, R&D है, you name it, it's all done here. So like I promised, आज मैंने आपको 3 अलग-अलग TV दिखाए हैं from the same brand. These TVs are serious bang for buck. And for more bang for buck content, subscribe to Tech Magnified. I'll see you in the next one.